We have already one session with Dr. Mukesh Kumar Verma because he has already converted his syllabi to CBCS at Sanchi University. So, sir, we have our syllabus divided into 4 units. Each paper is divided into 4 units and 4 papers in each semester. So, can it be divided into each paper in 4 credits or 5 credits? One question. Each credit will carry 15 hours or 20 hours. And another query is internal interdisciplinary courses or external interdisciplinary courses. So there is 2 provisions of interdisciplinary courses in CBCS. One is internal and another is external. So how we shall proceed regarding in this area? How we can convert our syllabi into that one? I think we can go one by one. Yeah. You talked about 4 papers. It is not the number of papers that you are having. It is the number of credit hours that it will be requiring. You may have one paper which may require 30 credit hours, 30 teaching hours. So you will have to sit down and see क्या हमारा अनुभव ये कितने में complete होगा, like that. You can modify it when now the same pattern you can put. So you are talking about restructuring with the same number of papers. If you are thinking like this, then you will have to reorient, restructure, giving emphasis on the number of contact hours. So contact hour we have. You were talking whether 15 or 20 in Bihar. The policy that we have decided and postgraduate we have already introduced here in all the university. Undergraduate we were on verge of introduction when the COVID semester came. 2 semesters have passed. So before that we had decided that to put it at 15. 10 plus 5, it will be 15. 15. 10 direct contact hour or 5 or 50? Total 15. So it will depend upon the type of subject, type of paper, total number of contact hour. It is most important. Number 1. Number 2, while deciding, preparing any curriculum, this has been more practice. I am talking about 1997 experiment that we had done about Magadha University. We had put +2 curriculum in CBSE, and then we put NET or GRE, LRE curriculum, AGRE that is required, and in between GATE, and in between put just like a fill up the blanks. All the topics, subtopics we put part 1 this month, part 2 this month. Then the same pattern we will have to arrange because the level will have to be taken care of. Number 1. Number 3, you were talking about whether it is interdisciplinary, interinstitutional, or whether you can go intra-institutional. You have liberty, particularly under NEP. We have a lot of liberty. Now this is the time teacher has really been empowered in NEP. This is the time to empower ourselves. Any teacher in any university, any department can create his or her own curriculum. वो सोच सकता है, इमेजिन, कल्पना की उड़ान उड़े और उसके बाद फिर सोचिए कि क्या है. और उसमें बुद्धिस्ट स्टडीज में देखा है many things which might have come to you that this topic is good topic for research. You can make that topic a curriculum material. You can design it. Nobody in the world is teaching that. So interdisciplinary credit transfer या कहीं से भी हो सकता है. The only thing, both the institutions must be recognized by our national apex body or the partner institute university must be providing transcript and must be providing details, and the details must pass through your equivalence committee. You will have to notify well in advance. Only these things are required. So it can be anywhere, intercontinent, intra-country, anywhere. May I add something to this? Actually,
While introducing CBCS, as sir mentioned already, what is important is the credit, number of credit. And for postgraduate courses, as far as I know, it should not be less than 80 credit. Not less than 80. But it would be good if you have 100 credit. Like right now, all universities in Bihar is running postgraduate programs, that is MA, MSc, MCOM courses, and these consist of 100 credit. And it is also not important that in the 4 semesters you divide it equally. The number of papers in each semester is not, it's not mandatory that it would be equal in number. Like you have suppose 20 credit, then 20 papers, each of 5 credit, that makes it 100 credit, which is now available in all Bihar University programs. It is not necessary that you should have 5 papers or 5 courses in each semester. Like what we have presently, we have 4 papers in the first semester, 6 papers in the second semester, 6 papers in the third semester, and in final semester it's very light. We have only 2 EC, that is elective courses, and 1 discipline specific elective. In the 4th semester, we have given liberty to the students that the 2 elective papers, they can use it at internship. So if we burden them with large number of courses, they have to stay in their own university, parent university. And now they have the liberty, combining these 2 elective papers, they can go anywhere. In any university in the country, any organization, any industry, even outside the country also they can go in the 4th semester. So that is the beauty of choice-based credit system. And in the final semester, the students are more concerned about placement also. So they have to prepare for placement or NET examinations and all these things. So the 4th semester is rather light, or they have the liberty to work something original. So we don't want to make them burdened in the 4th semester. So you have all the liberty. You can design your course as you like. Only the total credit is important. And as I mentioned, for inter-university or inter-institutional and going outside the institution is also in your hand. If you have large number of teachers, plenty of teachers, you can give more choices. But when the number of teachers is limited, the student-teacher ratio is not favorable, then CBCS. So it is like running home. What is in your budget, you plan it accordingly. Thank you. Yeah, see, now I think it is clear now. She is perfectly right in emphasizing on emphasis on credit and emphasis on total credit. It is upon you how do you divide it. How do you divide it? That is more important. सबसे बड़ी चीज है पुरुषोत्तम बाबू, सबसे बड़ी चीज है कि ये काम इतना आसान है, लगता है बहुत भारी, इतना आसान है कि आप बैठ करके या सारे शिक्षकों से मांग लें, आप अभी कौन कौन पत्र पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस है, कल क्या पढ़ाना चाहते हैं, कोई नया पढ़ाना चाहते हैं कि वही पढ़ाना चाहते हैं, सबका ले ले, कॉन्टैक्ट आवर बना ले और सारे को फिल अप द ब्लैंक्स की तरह अरेंज करके यू कैन प्रिपेयर इट. एक दिन बैठ जाएंगे ना, रफ डेटा तो तैयार कर लिया, रॉ डेटा तैयार कर लिया है, उसको ये करना है, मतलब कंपाइल. मुकेश कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल स्टडीज एज एसोसिएट प्रोफेसर. सर मेरा एक, हम लोग जहाँ सांची यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ एज ए CBCS के थ्रू सिलेबस पेपर फॉर्म किए, बट एक दो क्वेश्चंस मेरे माइंड में राइज हो रहा है कि जैसे कि फर्स्ट एक पहला प्रश्न ये है कि जो CBSE में इंटरनल मार्किंग का जो सिस्टम है, इंटरनल मार्किंग का जो सिस्टम है, क्या वो 50-50% रखा जाए? पहली बार कि 50% जो इंटरनल में होता है, मिड सेमेस्टर एग्जाम ले रहे हैं या असेसमेंट जो कर रहे हैं या असाइनमेंट ले रहे हैं, और 50 फाइनल
पहला क्या यह बाध्यता है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसका जो मार्किंग होता है 100 नंबर में, तो क्या हम फाइनल जो मार्कशीट देंगे बच्चों को, तो उसमें क्या मार्क्स देंगे या ग्रेडिंग सिस्टम देंगे, जो चूंकि ग्रेड आ रहा है तो ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रेड देंगे या मार्क्स देंगे। और लास्ट में 4th सेमेस्टर की बात मैडम की है, तो 4th सेमेस्टर में जहाँ जहाँ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी या सांची यूनिवर्सिटी जहाँ हम लोग सिलेबस बनाए थे, तो उसमें बच्चों को एक हम लोग प्रेफरेंस दिए थे ऑल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करके कि एक ऐसा डिजर्टेशन माइनर छोटा स्मॉल डिजर्टेशन बच्चों लिखने का प्रयास करें जो उसका फ्यूचर में किस सब्जेक्ट में किस विषय के बारे में इंटरेस्ट है, तो क्या इसकी भी बाध्यता है या इसमें लिबरलिटी है। तीनों प्रश्न। पहला सवाल आपका कि इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट का रेशियो क्या होना चाहिए। 30% या 50%, जो अब तक चल रहा है, जो मान्यता है, जो ऐसा है अभी फाइनल 35% ही यूजीसी की किसी चिट्ठी में। अभी एनईपी में ये 40 और 50% तक जाने की बात है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग और वो कहिए कि ब्लेंडेड लर्निंग की बात की जा रही है, उसमें 50% की, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है। सो एज ऑन टुडे इट इज 35%, लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी दे आर पुटिंग इट 30% इंटरनल असेसमेंट। नंबर 1 30% इंटरनल 70। दूसरी चीज आपने कही कि इसमें, इसका जवाब आप दीजिएगा। डिसर्टेशन का चक्कर हमें पता। दूसरी चीज आपने मार्क्स का कन्वर्सन का दे कि नहीं दे। अभी जो एक अंडरस्टैंडिंग है या जो मानना है कि आप ग्रेडिंग सिस्टम में तो ग्रेड ही देंगे एबी वगैरह, उसका डिकोडिंग भी किया जाता है। यू कैन प्रोवाइड इट, बट you can provide it at one place on your website or portal या notification, that will do. In the mark sheet में अगर लड़के को देंगे तो जो बेसिक पर्पस है कि 90 और मतलब 80 और 85 को एक ही ग्रेड में रख रहे थे, उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं करना चाह रहे थे, तो वो फिर मार्क्स का ही आ गया, तो ग्रेड रखने का पर्पस क्या होगा। इसलिए अभी इंडिविजुअल मार्क्स में, इंडिविजुअल क्रेडिट में हम ग्रेड ही देते हैं, तो यही अभी चलता है। कन्वर्सन में रेंज देते हैं, लेकिन अपने नोटिफिकेशन में वो नैक वाले देखेंगे, इसलिए हम बोल रहे थे कि नैक वाले देखेंगे कि आपके यहाँ वो स्पेसिफाइड है कि नहीं, है ना। ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज का डिसर्टेशन का। देखिए एक चीज है डिसर्टेशन में, जो यहाँ ट्रेंड है यहाँ हमारे यहाँ कि अब यहाँ हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ होगा नालंदा, देखिए बहुत सारे जॉब एवेन्यू है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई नई चीज खोज करके लावे। तो ये तो टीचर पर डिपेंड करेगा, इंस्टीट्यूशन। आपके यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो अच्छा है, काफी अच्छा, मतलब स्टूडेंट कम है पर टीचर, तो आप इसको अच्छे तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। मेंटरशिप अगर कर दिया, क्रॉस मेंटरिंग का भी इसमें आता है। ये 3 चीज इसका है। मैं जर्मन में था, वहाँ पे CBCS पदार्थ हम लोग चलाते थे, उसमें 60-40 का रेशियो था, और ये 2014 से चल रहा है। और 20 नंबर के हम लोग इंटरनल असेसमेंट 2 बार देते थे, और 60 के और 60 के नंबर के ऊपर थे। और एक पेपर 4 या 5 मिनट का डिफर फ्रॉम डिपार्टमेंट, वो इंटर डिपार्टमेंटल करते जाते थे। पास कोर्स BA 136 और 135 और 246, इसी तरह PG में 1 और 3 और 2 और 4 इस तरह से चलते हैं सर। पास कोर्स के लिए जरूरी यह है सर कि 6 सेमेस्टर में हम कोर और इलेक्टिव के रूप में 2 पेपर पढ़ाते हैं, 2 तरह से मोड में लेके चलते हैं। 4 पेपर होते हैं कोर के, 2 पेपर होते हैं इलेक्टिव के, इस तरह से। तो मेरा यह प्रश्न था सर, जैसे संस्कृत के आचार्य हैं, संस्कृत के आचार्य को मान लीजिए यहाँ 9 विभाग है, 9 विभाग में हम एंशिएंट हिस्ट्री वाले विभाग को पढ़ाना चाहते हैं, अपना 4 पेपर अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर, या पाली में यहाँ ग्रेजुएशन ऑनर्स शायद चलता है, और उनके बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ अपना संस्कृत का 2 पेपर। तो एक तो आता है हम MIL के रूप में पढ़ा सकते हैं अपना संस्कृत, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, MIL के रूप में 2 पेपर पढ़ा सकते हैं। शायद हम उसको रखने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर है, या मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन CBCS का भी किया नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सर
कि क्या वह हमारे ऊपर है या वह कंपलसरी है कि हम MIL को पढ़ाएं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश को, भाषाओं को, अन्य छात्रों को, एंशियंट हिस्ट्री वाले हों, अदर हों। दूसरा सर आगे भी है, ऑनर्स के बच्चों को हम GE के रूप में पढ़ाते हैं, जेनरिक इलेक्टिव। पास कोर्स के बच्चों को भी हम पढ़ा सकते हैं, ऑनर्स और पास कोर्स के दोनों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वह कितना पेपर हमें पढ़ाना चाहिए और उसका सिलेबस हमें किस आधार पर रखना चाहिए कि ताकि मैं संस्कृत का हूँ, संस्कृत को लेकर एक धारणा है समाज में कि संस्कृत बच्चों में रहता है कि संस्कृत हमें हमारे यहाँ मेनली PG कोर्सेज में जी। अनावश्यक mind about that we are having currently the percentage system and our mind is tuned that we do understand the evaluation process that we are allotting the marks, the student is going to get so and so percentage, so by that percentage his result is decided. So while moving toward the credit system and as 80 credits as madam has said earlier in the minimum in the PG, so means what would be the corresponding credit vis-a-vis percentage? Perhaps I think something to be said about that also to make it more clarified, because we will be transferring. And as long as we are understanding that this elective versus core papers, so core papers, as I do understand, that will correspond to the complete percentage, 100%, something like that. Now, and the elective courses, that is added something which will give the more credit that the students have done, more labor or have given more attention to these courses, that would give the additional credit. This is the one thing. Another thing, this credit system, and that we are going to adopt here or in also in our university or around the world also, what is the standard credits, so that the fluctuation in the total results of our student vis-a-vis other university or foreign students universities should not differ. So that should, I think, more be a little bit highlighted. Yeah, it is there. There is the conversion equation is there. It is sort of a statistical. Number one, that equation is already there. Number two, what would be the credit that we can incorporate in the final credit of our student? So that depends upon the decision of our equivalence committee based on the transcript being provided by that, or if the university is at par, we can also think of normalization. I think normalization is one of the practices which has been, for example, I had BITS Pilani, during their admission process also, they were using the word normalization. A topper of, I will take one topper from that university. So normalization. So we can also, we are at liberty in the present scenario to adopt our own means of normalization, own techniques of normalization. We have to get it passed through our equivalence committee. The equivalence committee shall look after the level of imparting education in core or whatever is there, and we shall also have to see the national accreditation agency. For example, if the university is having this grade or that, it is being recognized. So many things are there. It will be even more clear in very near future after some announcement under the NEP. It will be there. It will be there what sort of liberty you are given. But you are at liberty, and the credit point will naturally should depend upon the transcript and detail of their curriculum, and you can also have some inputs of the normalization and equivalence also. And so far as the additional credit point is concerned, normally it is the code. It is the credit in the code. There are this which gives you final. Just like in our time in honors, first class chemistry honors with distinction in past course, physics, mathematics. And distinction means that. So the marks in chemistry was graded separately, and marks in past course subjects were graded separately. We can have this mechanism, and then you can also devise your own mechanism of like that. There is one model. There are many models. The one model that you can adopt, UGC will not be thrusting upon you if you are maintaining minimum difference. That for qualifying credits
you can incorporate those. And for getting higher credits, you will have to decide, you will have to define the equations accordingly. There is some liberty. ज्यादातर हम लोग कुछ समझे नहीं है इसमें, लेकिन आपका एक कंपोनेंट है उसमें स्किल इन्हेंसमेंट का। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपना अगर स्ट्रक्चर करता हूँ ये पाली वाला कोर्स, एमए वाला, बीए भी हमारे अकेले डिपार्टमेंट है जिसमें बीए भी चलता है, यूजी कोर्स भी है। तो पाली के साथ हम मैं ये समझता हूँ कि स्किल इन्हांसमेंट मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो मेरी समझ है उससे रिलेटेड है, तो हम कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें डालेंगे कि जो पाली के साथ मैच करेगा। जैसे स्किल इन्हांसमेंट में जैसे अगर बराबर केस में जाते हैं, धम्पत प्रियदर्शी राजा अशोक जो भी है, या फिर त्रिपिटक संहिता बोलते हैं ना, त्रिपिटक, तो अब उसमें रिसाइटेशन हुआ, वो भी स्किल का हिस्सा है। कितना पाली पढ़े कि किस तरीके से जाएगा। अगर संस्कृत पढ़ रहा है तो संस्कृत में वेदांत भी करेगा, आनो भद्रा हाकरा तबो वजंतु, किस तरीके से उच्चारण किया जाए, तो ये भी स्किल का हिस्सा है ना। तो आप यू कैन थिंक ओवर इट। आप पाली में किस तरीके से स्किल में, कि टूरिज्म में, बिजनेस में, कहीं ग्रंथों के पढ़ने में, कहीं और किसी तरीके से वो कौन सा स्किल आप डिजाइन कर सकते हैं जो उसको फायदा दे, ये आप पर निर्भर करता है। आप चिंतन करेंगे निकल जाएगा। दुनिया में कोई विधा ऐसी नहीं है जिसमें स्किल नहीं निकलता है। एक मैं इसी तरह का कहीं बोल रहा था, तो कहीं पर बात हुई कि भाई इंटर्नशिप की बात बोलते हैं, हम तो उर्दू पढ़ाते हैं। एक हमारे कलीग ने कहा कि भाई उर्दू पढ़ाते हैं, हम इसके लिए इन्हांसमेंट क्या या इंटर्नशिप क्या करेंगे, हम कुछ नहीं। तो उर्दू जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ स्कूल के टीचर में जाके उर्दू का तो क्लास ले सकते हैं। इंटर्नशिप पर बात कहने का मतलब कहीं भी आप कुछ कर प्लान है। हम समझते हैं कि हरी कथा, थैंक यू। और ऐसे बताना चाहेंगे, देखिए स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड जो कोर्स है, आप पाली डिपार्टमेंट चलाते हैं तो स्किल डेवलपमेंट की पाली से रिलेटेड वो आवश्यक नहीं है। जैसे कि सर ने बताया लाइफ स्किल के बारे में, स्किल डेवलपमेंट में आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स भी दे सकते हैं। मशरूम कल्चर दीजिए, मशरूम कल्चर एंड कल्टीवेशन। आप बाइसाइकिल रिपेयरिंग की स्किल रिलेटेड कोर्स है, आप कारपेंट्री दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो लाइफ स्किल से जुड़ा हो। अगर पाली में नौकरी नहीं मिले, कम से कम इस स्किल डेवलपमेंट कोर्स अगर किया हुआ है तो उससे कोई नौकरी या लाइवलीहुड मिल सके। ये उद्देश्य है सीबीसीएस में स्किल एनहांसमेंट कोर्स। For your enlightened lecture, and it's really very fruitful for us how we have to prepare the CBCS curriculum and how we can convert the new courses into the old courses into new one. So we are really thankful to you, and we hope in future if we require, please come and guide us again. One or two times we may require your guidance. So as per requirement, we will invite you, and please do come and guide us. So this is my humble request to both of you. And now I invite Professor Vijayakar for release of the book. Let me just change the structure.
who have expertise on national education policy, credit, choice-based credit system, NAC, and all related issues. Both of them elaborated the subjects very skillfully, and that too in a very lucid manner. And our all faculty members, students, research scholars, and other participants were really benefited. We had a wonderful, very meaningful, interactive session, followed by the release of the journal, which has been edited by Professor Vijay on Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat, this magazine is also a part of that national education policy which we are dreaming of implementing. We have many policy platforms, and I believe all of us are very much acquainted with the implications and significance of this policy which has been created, and after long discussion, and crores of people have participated, their opinions have been taken, and just compiling all those discussions, those opinions, this national education policy has come into existence. So whatever we are going to do regarding our NAC or CS, cross-based credit system, and everything which we have discussed is a part of that. We are progressing towards making and evolving a system of education which could benefit the whole nation, which could develop the sense of pride among all the Bharatiya people. So I am grateful to you, sirs, madam, that you accepted my invitation, my request, and I know from Darbhanga it takes about 4 to 5 hours, and you accepted that, and Professor Verma ji had come a few days earlier also, and I had made a personal request to him, and he was very kind to accept my invitation. So I am really grateful to both of you, and especially I am also grateful to Madam. Yesterday we celebrated that International Women Day, and we were talking about in our culture also, we say that behind every success of man there is a woman. So you are the inspirational part, and you motivated, you made him agree. Yesterday you came from Calcutta, you were so busy, so tired, but still you make it possible. You came over here and shared your views, you enlightened all of us. So I'm really very much thankful to you. And as Professor Rana Prasatham was requesting, that request was made from my side also, that you kindly spare your time. Nalanda is a very small place. We may not be able to provide you very high quality of hospitality. We are really in a village. It's not neither like Darbhanga nor like Munger. There might be a number of facilities there we don't have, but there is no dearth of warmth in us. So that warmth you will always find, feel, and that will always be there. We have greatly benefited from your scholarship. Kindly continue to extend your guidance and your valuable suggestions. So once again, I'm thankful to you, and I'm thankful to my colleagues who participate, who listen to both the eminent scholars very carefully, sincerely, and silently, patiently, and after that they had interacted also. They had a number of questions and queries
So you shared with them, you interacted with them, and I understand there is no end of curiosity, there is no end of knowledge. So as much as we ask, we interact, we enhance our knowledge, we increase our knowledge, we go few miles further. I hope we have already adopted a number of things which are concerned with this choice-based credit system. But now we have to compile them and we have to give them a new shape. So we have already covered a long distance. There is nothing absolutely, it's not nothing absolutely new. But we have to concretize, we have to give a new shape, and it is our sheer luck that you came over here and you shared your knowledge with us. Thank you so much. अभी हमारे कुल पिता के आने से कितनी दिशाएं खुल रही हैं, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। नए नए विषयों पे महाविहार में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं और उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भविष्य, हम अपने भविष्य को देख पा रहे हैं कि हम कल कहाँ होंगे। अब मैं अपने कुल सचिव डॉक्टर एसपी सिन्हा साहब से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सिन्हा। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। Honorable Vice Chancellor, Professor Baidyanath Lal sir, the President of this academic session, Professor Ranjit Verma sir, Honorable Vice Chancellor, Munger University, Professor Dolly Sinha ma'am, Pro Vice Chancellor, Allen Misra University, Darbhanga. One physicist and one chemistry, the great, not scholar, is the great scientist, who have not delivered his lectures on their own field, but they are delivered and give suggestions, open our eye on the most burning topic on which we are very behind. We just try our best to achieve these things. Yesterday, we have Dr. Shukla ma'am have organized a lecture in the chairmanship of Honorable Vice Chancellor regarding how to integrate the NAC, and again today when ma'am delivered the whole lecture on PowerPoint, these things have been revised, and initially I thought he had just warning us that you must be alerted, very soon I am coming. So just now we are taking on this, your lectures is just like taking on this type of attention that be alerted, be alert, I am just coming. So ma'am, we are ready in this direction, but as far as the credit-based system is concerned, we are very traditional persons. When some years back, when the students
or those who are coming from other they have done the graduation in other subjects. We have not taken in जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे